and my chapter name is The Earth in the Universe. Can you tell me how huge our Earth is? It is very huge, and our scientists say that our Earth is a tiny speck in the vast universe. यानी vast universe यानी बहुत बड़े यूनिवर्स में, बड़े बड़े ब्रह्मांड में ये जो हमारा अर्थ है वो छोटे रूप में है. ठीक है. When you look up at the sky at you look sun, moon, stars and other things. The space contains various heavenly bodies. It also contains dust material, gases and the pieces of rocks. ऐसा माना जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें ये जो अर्थ है वो बहुत छोटा है, यानी नमक के दाने के रूप में है. ठीक है. तो हमारा जो यूनिवर्स है जो भास्ट रूप में है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मून, सन, स्टार्स, बहुत सारी चीज जो है जो खगोलीय पिंड है, यानी जो हेवनली बॉडी है उसको कहा जाता है खगोलीय पिंड. जो स्टार, मून, सन ये सारे क्या है? खगोलीय पिंड है. ठीक है. तो आज हम लोग देखेंगे द यूनिवर्स. इसमें जो मेन थिंग है वो क्या क्या है? द इम्पोर्टेंट थिंग्स ऑफ द यूनिवर्स. क्या क्या है? फर्स्ट इज द यूनिवर्स इज द फर्स्ट
heat and light. Third is there are millions of stars in the universe. The millions of stars millions of stars in the universe. Okay, ये आपको समझ में आ गया होगा. The star is a huge heavenly body. Next is they have their own heat and light. The millions of stars in the universe. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्स्टेलेशंस. कॉन्स्टेलेशंस जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नक्षत्र मंडल. जब हम लोग रात में आकाश की ओर देखते हैं तो बहुत सारे जो स्टार्स रहते हैं वो ग्रुप में रहते हैं और एक पैटर्न बनाते हैं. पैटर्न मीन्स एक आकृति बनाते हैं. ठीक है. द ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड द पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन यानी नक्षत्र मंडल, जिसको नक्षत्र मंडल कहा जाता है. और ये नक्षत्र मंडल जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आपका आता है लियो, उर्सा मेजर जिसको हम लोग क्या कहते हैं ग्रेट बियर भी कहते हैं, और सब ओरियन. ठीक है. जिसको हम लोग इंडिया में जो ग्रेट बियर है उसको क्या कहा जाता है सप्तऋषि. और ये जितने भी नक्षत्र मंडल में जितने भी आकृतियां आपको दिखाई देती है वो जानवरों की हो सकती है, किसी बादल की हो सकती है या फिर किसी आदमी की हो सकती है. ठीक है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्स्टेलेशन. नेक्स्ट टॉपिक है solar system. You know, the sun is also a star. It's on heat and light, and they gives heat and light human beings and other things. Okay. The earth is also gets heat and light the sun. Without sun, life is not possible. जैसे हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, वो सन से लाइट लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं. उसी तरह से अगर ये सन नहीं रहा तो हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं होगा. ओके. देन द सन इज ऑल्सो अ स्टार. एंड जब हम सन को देखते हैं तो सन के चारों ओर सर्किलिंग 8 प्लैनेट आर सर्किलिंग, जो 8 ग्रह जो 8 ग्रह होते हैं वो इसके चारों ओर रेगुलर राउंड एंड राउंड घूमते रहते हैं. ठीक है. ये 8 ग्रह क्या क्या है ये हम देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट ऑफ द सन. ओके. So some important things of the sun is the sun is also a star. It's on heat and light. It is closest to the earth. ये जो है अर्थ के बहुत नजदीक है. The earth gets heat and light to the sun. Without sun there would be no life on earth. Okay. बिना सन के अर्थ में जीवन पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट इज द सन हैज 8 प्लैनेट सर्किलिंग. माने जो सन है सन के चारों ओर 8 प्लैनेट
and last is Neptune.